Good evening, ma'am. Hello, good evening, everyone. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? I'm good. Thank you so much for asking. Good evening, ma'am. Welcome. Good evening, Raman. How are you? I'm good, ma'am. How are you? I'm good. Thank you. Good evening, ma'am. Good evening, Surbi. You are for the GT, right? Yes, ma'am. Okay, great. Okay, so very warm welcome to Baby Code Free IELTS sessions. As you know, I'm Tanu Virmani, an IDP certified trainer and a TEFL and TESOL certified trainer. So today we're gonna talk about writing task 2. आज हम writing task 2 का introduction करेंगे. But before that, if you have any doubt till the classes we have covered, you can ask me. Any difficulties you're facing in any of the module, like the sessions we have covered, so आप मुझसे पूछ सकते हो. Hello, Ashu Yadav. Ashu Yadav, are you there? Yes, Ashu. Please introduce yourself. You're attending this session for the first time, right? Please introduce yourself. Tell us about you. Okay, no problem. Ma'am. Yes, Raman. Ma'am, yesterday we read na dissatisfaction वाला ना letter करिया सी ਆਪਾਂ ਨੇ Yes. ਤੇ ma'am ਉਹ formal ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ semi formal? What was the question? Like write to shopkeeper ना? Shopkeeper? No. Yesterday, though, we did a letter to a friend, na? Dissatisfaction No, no. for कल जो हमने letter करा, that was about friend, ना? कि friend को आपको accommodation बतानी है, he's coming to your country. कल तो हमने yes ma'am letter करा था. that one but ma'am आप वो भी ਕੀਤਾ ਸੀ ना हमने सिर्फ मतलब I was confused question, in हाँ, these हमने सिर्फ question read करे थे. एक हमने yes ma'am accommodation officer वाला करा था. That was formal letter. एक हमने करा था कि बिल्डिंग के मैनेजर को लेटर लिखो जिस बिल्डिंग में आप काम करते हो. yes ma'am सो बिल्डिंग के मैनेजर, अगर उसी बिल्डिंग में आप काम करते हो, बिल्डिंग के मैनेजर को आप लेटर लिखोगे तो वो फॉर्मल होगा कि सेमी फॉर्मल? it's semi formal ना? यस, तो वो सेमी फॉर्मल होगा. ठीक है. okay ma'am yes ma'am और एकोमोडेशन ऑफिसर से आपका रोज का कांटेक्ट नहीं होता. एकोमोडेशन ऑफिसर इज अ ऑफिसर जो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है. तो उसके साथ आपका कैसा रिलेशन रहेगा? इट्स फॉर्मल, राइट? yes ma'am सो वो फॉर्मल लेटर में काम करता है. हाय जरीन, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. How are Thanks you? for joining on time today. Thank you. Some of my studious students, right, who are Hello, regular ma'am. in the classes. Yes, Ma'am, I Subi. have a question. Yes, Subi, please ask. Ma'am, yesterday I did the Mhm. letter in formal way to write Yes. on the baby application code, Mhm. but I got just 5.5 band due to I think of grammatical errors. Mhm. But the app doesn't show me the how many grammatical errors or something that help me to improve my grammar.
Okay, no worries, I'll look into that. Okay, I will sorry, I will look into that. Okay, very Okay, soon you will be getting all these details. Okay, ma'am. Thank you. No problem. So let's start today's sessions. No doubts regarding the previous one. No, ma'am. Okay, तो quickly हम session एक बार revise करते हैं. Let's see. Everybody please mute yourself, and those who want to answer they have to raise their hands. ठीक है? Let's talk about academic task 1 first. In academic task 1, what is the first step we do in report writing? First step. No one. Am I teaching so bad? May I repeat the question? What is the first step when you write your academic writing task 1? Paraphrase the question. Exactly. So what do we write first is we write about the introduction part. But introduction से पहले हम क्या करते हैं? Making bullet points. Do we make bullet points in report writing? No. No, I'm talking about writing tasks too. No. I am just taking a recapitulation of academic writing task 1. Report writing I'm Okay. talking about. Oh, And okay, report okay. Sorry, writing, sorry. what is the first step you do? So the very first step is you analyze the picture. आप सबसे पहले अपनी पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन को क्या करते हो? एनालाइज करते हो. And the first thing which you write in report writing is introduction, as Gagan said, right? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? Paraphrasing लिखते हैं question की, that is introduction part. Next, what is the second step? Overall, overview. Overview, correct. So how do we write overview? Overview कैसे लिखते हैं हम? Upward and downward trends by not One showing any statistics. One by one, please. Yes, Zareen. Ma'am, not showing any kind of statistics particularly. Correct. Only to write overview trends by only showing changings and trends. Correct. The most important highlighted key features, right? But not showing any kinds of figures there. What is the third step? Third step? Yes, please. Who's BP1 and BP2. Yes, that means key detail para 1 and key detail para 2. So what do we write in key details paragraph? What do we cover? We cover all the graph or pie chart details about data figures correctly in order or in form of percentages or any kind of things. Yes, correct. And ऐसे करके mechanical data नहीं लिखना कि it was 3%, it was 10%, it was 15%. No. ऐसे नहीं लिखना. Okay, always arrange that you cover all the features. कि आप सारे features को cover करो, उनको categorize करो, जैसे भी आप category बना सकते हो. Right? If you think कि मेरे पास number, suppose if you have yearly का data है, 10 years का है, different months का data है, तो उनको categorize करो ताकि आपके लिए simple हो जाए थोड़ा सा. Compare भी करो and contrast भी करो. Right? Okay, now after this, do we need to write any conclusion? Yes? हम कोई conclusion लिखते हैं report writing में? No, ma'am. No, we do not write any conclusion in the report writing. Okay, let's quickly talk about letter writing. What is the first step of letter writing? First greeting. Yes, but the very first thing is categorizing the letter. Identify the type of letter.
है ना? Yes, ma'am. सबसे पहले आप Yes, ma'am. क्वेश्चन को रीड करोगे, देन आप टाइप ऑफ लेटर बताओगे कौन सी कैटेगरी का लेटर है, देन आप ग्रीटिंग्स डिसाइड करोगे. ग्रीटिंग्स मींस द सैल्यूटेशन पार्ट. Yes, ma'am. Okay, next thing, what we write next after greetings or Purpose salutation? of letter, opening paragraph. Yes, purpose of the letter. Purpose of the letter. So purpose of the letter होता क्या है? What is purpose of the letter? X, ma'am. Reason why you write the letter. Yes. Yeah. Purpose is nothing but the reason for writing the letter. कि आप letter लिख क्यों रहे हो? Whether it's for Yes, ma'am. complaint, whether it's for suggestion, a kind of a request, or just replying a reward to your friend. So that is Yes, reason. ma'am. After purpose, what do we write? Explain the bullet points. Yes. Bullet point number 1. 1, 2, 3. And always read the bullet point carefully. Because you can't leave ma'am. any element. अगर आपके bullet point में 2 question पूछे गए हैं, so you will answer both the questions. जैसे Okay, हमने ma'am. लास्ट जो कल लेटर राइटिंग करा था, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? फर्स्ट बुलेट पॉइंट था, रिमेम्बर? What is the best time to Weather visit and the country of and that. why? Yes, ma'am. कि बेस्ट Yes, ma'am. टाइम कौन सा है विजिट करने का और क्यों? Yes, तो ma'am. आप वो टाइम पीरियड भी बताओगे कौन सा बेस्ट टाइम है और क्यों वो बेस्ट है, ये भी आप बताओगे. सो देयर वर 2 क्वेश्चंस इन 1. Yes, ma'am. Harshdeep, what you want me to explain again, dear? Yes, Harshdeep. Ma'am, I am late joined, so I tell Dear, you. I'm not starting anything new. अभी मैंने start नहीं करा आज का टॉपिक. I'm just taking a recap of yesterday's session. मैं सिर्फ लेटर राइटिंग का एक recap करा रही हूँ. Okay? Okay, I am first session, ma'am. We are Join. joining this session for the first time. Yes, ma'am. Okay, Harshdeep, but we have covered 4 sessions of writing. So you can re-watch all those sessions. आप उन sessions को application में देख सकते हो दोबारा से. Okay? Okay, ma'am. Okay, what is the next step? Yes, after writing the first bullet point, Write we have to second write bullet point. second bullet point. So that will be this next paragraph. Each bullet point के लिए आप each separate paragraph create करोगे. Now second Yes, bullet point में if you have types of accommodation, तो आप types of accommodation बताओगे, सिर्फ एक accommodation नहीं बताओगे, right? So always Okay, ma'am. read your bullet points, because अगर आपने bullet points को read नहीं करा, that means आपने address नहीं करा task को. And then do Yes, not say me कि आपका 7 band क्यों नहीं आया, right? So always read your bullet points very carefully. आपको उनको address करना है. Examiner Okay, want ma'am. these things from you to write, so उसको लिखो आप, ठीक है? Then last is your, sorry, next is your Third third bullet point, Third next bullet point. paragraph, Yes, ma'am. and after that, let's see how many of you are listening to me carefully yesterday. What comes after third paragraph? That means third bullet point. closing, ma'am. Closing what? Closing the BP2. letter. No, Who ma'am. said It's BP2? like see you soon. BP2. Zareen, BP2? No, ma'am. We talked about all 3 paragraphs. Where were Ma'am, you? closing the letter, I think. Before closing the letter, we write a rounding of statement. Around it. Yes, ma'am. Best Yes. wishes. Everybody- Best wishes. Zareen? No. Zareen, is this you Yes. who's saying best wishes? Actually, ma'am, I haven't properly taken yesterday's class. That's why. So why I'm just academic rewatch student. the session, please? Please. I'm academic student. It's okay if you are an academic student, but these are the basic things. These are Yes. the very basic things which you need to know how to write a letter.
right? Okay. Sometimes we learn things not because we need to give exam, just for the knowledge also, right? Okay. Okay, so for GT students, I'm asking the last we write is rounding off statement. Look forward to see you soon. I await for your prompt response. And then you do the closing. Closing Yes, means a sign off, sign off. right? Sign off Yes, with ma'am. yours faithfully or sincerely, best wishes, warm regards, and your name. Clear? Excuse Yes, me, ma'am. ma'am. I have a question, please. Yes, yes. Ma'am, is writing one module has 9 bands or writing two also has 9 bands? Sorry, I No. didn't get you. 9 bands as in? Ma'am, You as get a combined band score for task 1 and task 2. how आपका they combine? task 1 is of 1/3 of weightage or task Okay, 2 is 2/3 of weightage. okay, And then okay. you get total writing का band score. I got it. Thank you, ma'am. No worries. Okay, so let's talk about today's session now. आज हम क्या करने वाले हैं? We're going to talk about introduction part. Introduction to the writing task 2. Okay, what do you all know about writing task 2? क्या पता है आपको writing task 2 के बारे में? What is the time duration? क्या time duration होता है writing task 2 का? 3 minutes. And it will take 40 minutes 40 as a whole Yes, for writing task 2. correct. And what is the word limit? 280 250 words. Yes, you have to write at least 250 words. But it Okay. can be reached up to 270 to 275. Yes, it's up to you, right? It depends on person to person, what are their writing skills. Next, what are the types of questions in essay writing? There are 5 types. 5 types. Yes, and what are those types? Opinion essay, agree, disagree, advantages and disadvantages, double question essay, and problem solutions Yes, and discussion essay. okay. And how many paragraphs do we write? 4 paragraphs. 4 paragraphs. Okay, Yes. great. So let's talk about writing task 2 in detailed manner. Now, what is essay writing? Essay writing means when you are asked, जब आपको क्या दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, and you are asked to write a formal essay. आपको एक formal essay लिखना होता है. Make sure कि writing हमारी हमेशा formal. Writing is always formal. Speaking is informal. So make sure जब आप लिखते हो आप ये ध्यान रखो कि writing formal है. चाहे आप लेटर लिखो, रिपोर्ट लिखो या टास्क 2 में ऐसे लिखो. And one more thing, the candidates who are joining this session for the first time, academic writing में और general training, GT writing, दोनों में task 2 same होता है. Task 2 is essay writing. Okay? So here you have to write a formal essay of at least 250 words for the given essay topic. और ऐसे टॉपिक हमेशा आपका जनरल होता है. इट्स नेवर, कभी भी आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जिसके बारे में आप नहीं लिख सकते, राइट? एंड टास्क 2 इज सेम फॉर बोथ एकेडमिक एज वेल एज जनरल स्टूडेंट्स. नाउ इन दिस यू विल राइट अ फॉर्मल एसे जो आप कितने पैराग्राफ्स में लिखोगे? मिनिमम 4 to 5. 4 is the minimum part. You can write 5 paragraphs also, that's up to you. And this task 2, it holds 66% of weightage. 66 means 2/3 of weightage आपकी task 2 की होती है. Now, what is the assessment criteria? How your writing will be evaluated? Writing कैसे score मिलेगा आपको? Writing will be evaluated on the basis of 4 parameters. First is task response. Task response, lexical resources, coherence and cohesion, grammatical range and accuracy. Can anybody explain any one of the feature?
I have explained this. What is task response? मैम की जो अपने को क्वेश्चन दिया है, अपने उसको एड्रेस अच्छी तरह से किया है या नहीं किया, वो क्या पूछता है और अपनों ने क्या उसका मतलब कि आंसर दिया उसको सही तरीके से लिखने को। So task response means how do you respond to your statement? जो आपका ऐसे का टॉपिक है उसको आपने कैसे रिस्पॉन्ड करा है? डिड यू कवर ऑल द सफिशिएंट पॉइंट्स और नॉट? आपका फॉर्मेट क्लियर है कि नहीं? आपने पैराग्राफ्स कितने लिखे हैं? वहां पे प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, आपने कॉजेस तो नहीं लिख दिए? सॉल्यूशन पूछी गई है, आपने रीजंस तो नहीं लिख दिए? So all this thing will be covered in task response. ये सब task response में चेक किया जाता है. So this criteria they checks the relevance of your response. आपका आंसर relevant है कि नहीं? आप off the topic तो नहीं चले गए, right? Now for example, see here, अगर आपका essay topic है, आपका question है that everyone should adopt a vegetarian diet because eating meat can cause serious health problems. Question को ध्यान से read करना कि everyone should adopt a vegetarian diet, कि vegetarian diet को adopt करे सब, because eating meat can cause serious health problems. To what extent do you agree or disagree? तो अब आपसे क्या पूछा गया है? Agree और disagree, कितना extent? One more thing, जब हमसे ये पूछा जाता है ना to what extent, ये नहीं पूछा डू यू एग्री और डिसएग्री. अगर डू यू एग्री और डिसएग्री बोला गया है तो आप कंप्लीटली एग्री करो या कंप्लीटली डिसएग्री करो. बट अगर आपसे एक्सटेंट पूछा गया है दैट मींस कितना आप एग्री करते हो, कितना आप डिसएग्री करते हो. तो आप 80% एग्री भी कर सकते हो, 20% डिसएग्री भी कर सकते हो, और वाइस वर्सा. आप 80% डिसएग्री करो, 20% एग्री भी कर सकते हो. So please note down the difference between this. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपका आंसर, if the answer is about health problems caused because of leading a sedentary lifestyle, then task response goes for a task. Now for task response, your answer should revolve around health problems caused because of eating meat. आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हर बंदा, एवरीवन शुड अडॉप्ट क्या करे, वेजिटेरियन डाइट करे, क्योंकि मीट खाने से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स है. तो आप जो भी, अगर आप एग्री करते हो, आपको लगता है कि नहीं मीट खाने से प्रॉब्लम्स होंगी, राइट? अगर कोई मीट ईट करता है तो उसको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी. डू यू एग्री और डिसएग्री? क्या लगता है, आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? यस, आई वांट आंसर. एग्री. So, अगर आप एग्री करते हो तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, कि आप अपने आंसर्स वो दो कि मीट खाने से ये प्रॉब्लम्स हुई. तो आपका सारा रिस्पॉन्स किससे रिलेटेड होगा? वो हेल्थ प्रॉब्लम से, जो किसकी वजह से हुई है? मीट को ईट करने, राइट? सो मेक श्योर अगर आप ऑफ द टॉपिक जाके कुछ और डिस्क्राइब कर देते हो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज हो रही है इसकी वजह से और उसकी वजह से, नो, देन दैट इज रॉन्ग. आपको वही हेल्थ प्रॉब्लम्स लिखनी है जो सिर्फ ईटिंग मीट की वजह से हो. तब आपका आंसर जो है वो टास्क रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली रेलेवेंट होगा. अदरवाइज आपने इररेलेवेंट रिस्पॉन्स लिखा. ओके, सो मेक श्योर आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो एंड देन आंसर करो. See the next one, lexical resources. Lexical resources क्या होते हैं? vocabulary. Yes, lexical resources is vocabulary part. So आपकी vocabulary यहाँ पे चेक होती है. So same question, ये सेम क्वेश्चन में आपका आंसर जो होना चाहिए उसमें आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी का यूज करना है. कैसे करोगे आप? सी दिस, ये सेंटेंसेस देखो. There are number of reasons why we should turn vegan and stop eating meat.
ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें नॉर्मल वर्ड्स का यूज किया गया है, बेसिक वर्ड्स का। नेक्स्ट देखो, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई वी शुड टर्न वीगन एंड स्टॉप ईटिंग मीट। तो इसमें क्या क्या वोकैबुलरी, फर्स्ट में नंबर यूज किया था, सेकंड में सेवरल यूज किया। थर्ड वन देखो, देयर आर plethora of reasons why we should turn vegan and stop eating meat. So plethora is an uncommon word, right? We generally do not use this word every time. So try to use uncommon vocabulary, जो basic ना हो। Common होगी तो obviously you will be rated as normal, आपको एक average score मिलेगा। But अगर आप uncommon complex words use करते हो, then it will be good in terms of lexical resources. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now for coherence and cohesion. Coherence and cohesion क्या होता है? आपका ऐसे कैसे आपने ऑर्गेनाइज करा है, पैराग्राफिंग कैसे करी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे कनेक्ट किया है, लिंकिंग वर्ड्स है कि नहीं, डिस्कोर्स मार्कर्स आपने ऐड करे हैं कि नहीं, राइट? So for example, see this question. In some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. So हाई स्कूल फिनिश करने के बाद और यूनिवर्सिटी स्टडी स्टार्ट होने से पहले उनको एनकरेज किया जाता है कि वो वर्क के लिए या ट्रैवल के लिए कहाँ जाएं, दूसरी कंट्री जाएं, राइट? ट्रैवल करें बेसिकली फॉर अ ईयर। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर यंग पीपल हु डिसाइड टू डू दिस। तो आपको एडवांटेजेस बतानी है और डिसएडवांटेजेस बतानी है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई यंग पीपल ये डिसाइड करता है कि वो वर्क के लिए या ट्रैवल के लिए फॉर अ ईयर जाता है, तो उसकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, राइट? सो ऑलवेज कोहेरेंस एंड कोहेजन आपकी पैराग्राफिंग को चेक करता है कि आपका ऐसे ऑर्गेनाइज है या नहीं। सो सी दिस, एडवांटेजेस मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन वन पैराग्राफ एंड डिसएडवांटेजेस इन अनदर। आप अगर उसे मिक्सअप करते हो, दैट मीन्स देयर इज नो कोहेरेंस। सो नेवर राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन द सेम पैराग्राफ, और ऑलवेज सबसे पहले आप एडवांटेजेस से स्टार्ट करो। आपका फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ ऑलवेज क्या शो करेगा? एडवांटेजेस, एंड द सेकंड पैराग्राफ विल ऑलवेज बी disadvantages. Never mix your advantage and disadvantage in first paragraph and then second paragraph again advantage and disadvantage. No, that means no coherence is there, right? और cohesion के लिए आपके ideas logically linked होने चाहिए। So अगर आप elaborate कर रहे हो on the advantages but using on the other hand, like see, as in, just give me a second. Yes. So if you are elaborating on the advantage but using on the other hand, जैसे कि A is an advantage, on the other hand B is also an advantage, the cohesion is poor. आप यहाँ पे सारी advantages बता रहे हो, contrast कैसे करोगे, है ना? Okay. तो आप दो advantages के लिए on the other hand नहीं use कर सकते ना। on the other hand हम कम use करते हैं जब हम compare and contrast करते हैं, contrasting statements के लिए, राइट? ए एक एडवांटेज है और बी डिसएडवांटेज है, तब आप ऑन द अदर हैंड यूज करोगे, राइट? सो मेक श्योर जब आप डिस्कोर्स मार्कर्स यूज कर रहे हो वो करेक्टली यूज करो। एडवांटेजेस, सारी एडवांटेजेस लिख रहे हो और बीच में ऑन द अदर हैंड यूज कर रहे हो, दैट इज इनकरेक्ट, वो गलत है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज आपकी ग्रामर यहाँ पे चेक होती है कि ग्रामर करेक्ट है नहीं, स्पेलिंग एरर्स यहाँ पे आपके चेक होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ चेक होती है, तो आपने क्या सेंटेंसेस लिखे हैं। नाउ सी, अगर आपने लिखा है एजुकेशन इज गुड
देन दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. एजुकेशन आर गुड कभी करेक्ट नहीं होता. राइट. प्रपोजिशंस देखो. इन 10 AM, दिस इज इनकरेक्ट. एट 10 AM बोलते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें, पंक्चुएशंस, प्रपोजिशंस, ये सब आपकी इवैल्यूएट होते हैं. आपके टेंसेस यहाँ इवैल्यूएट होते हैं. कंप्लीट ग्रामर. ग्रामर सेशंस में, ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज ग्रामर की क्लासेस जाके चेक करो, बिकॉज राइटिंग में ग्रामर आपकी इवैल्यूएट होगी. राइट. ग्रामर के सेशंस देखो. अगर आपको लगता है कि समथिंग आई हैव नॉट कवर्ड इन ग्रामर, तो प्लीज मुझे डीएम करो. मतलब जब भी सेशन में आओ मुझे बताओ कि ये वाला टॉपिक ग्रामर का कवर नहीं है. आई विल ट्राई टू क्रिएट अ सेशन एंड अपलोड. ओके. नाउ सी सिंपल टेंसेस. If the government had resolved this problem, we are not in trouble now. See this sentence. ये इनकरेक्ट है. We are not in trouble now. If बोला है. So if the government had resolved this problem, we would not have been in trouble now. Tenses पे focus करो. Tenses correct होने चाहिए. Okay. Clear? Okay, ma'am. Yes, Now ma'am. how we gonna plan our Okay, ma'am. essay? Planning करते हैं because 40 minutes का time है and 250 words लिखने हैं. So make sure from exam point of view आप 5 to 7 minutes में अपनी सारी planning कर लो essay की. क्वेश्चन को रीड करो, स्ट्रैटेजाइज करो, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या नहीं लिखने हैं. देन नेक्स्ट 25 मिनट्स में ऐसे को राइट डाउन करो. देन लास्ट के जो 5-7 मिनट्स आपके पास बचते हैं, उसमें आप क्या करोगे? कंप्लीट रीड. रिव्यू करो अपने Proofreading. Checking. एग्जैक्टली. Cross checking, ma'am. क्रॉस चेक करो, स्पेलिंग Proofreading. देखो, रिव्यू करो. यस. Now, how you gonna plan your essay? Very first is identify करो what is asked in the question. पूछा क्या क्या है ना? क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, क्या पूछा गया है. डू यू हैव टू राइट फॉर बोथ द साइड्स, और आपको चूज करनी है वन साइड. जैसे कि डू यू एग्री और डिसएग्री, और डिस्कस बोथ साइड्स. सो डिस्कस बोथ साइड मीन्स आपको तो दोनों साइड्स के बारे में लिखना है. आपको डिस्कस करनी है बोथ साइड्स. बट डू यू एग्री और डिसएग्री लिखा है, दैट मीन्स आपको एक साइड चूज करना है. राइट. डू यू हैव टू प्रोवाइड आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस. कहीं डबल क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है जिसमें दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं. डू यू हैव टू कन्वे ओनली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और डू यू हैव टू गिव एन ओपिनियन. आपको मैम सिर्फ एडवांटेज. यस. मैम जो एग्री डिसएग्री वाला होता है उसमें अपने दोनों साइड पिक नहीं कर सकते? डू नॉट गो फॉर दिस. आप उसे नहीं लिख पाओगे. उसके लिए योर राइटिंग स्किल्स नीड टू बी वेरी प्रोफिशिएंट. सो नेवर चूज. आपको डू यू एग्री और डिसएग्री बोला है ना, तो आप वैसे भी एक ही साइड चूज करोगे. और बोला है आपसे. राइट. मैम जैसे टेक्नोलॉजी पे कोई ऐसे आ गया तो फिर आप कह सकते हैं कि उसके एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, तो वो कैसे करेंगे? लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आपसे बोला गया डू यू एग्री और डिसएग्री, तब आप दोनों कैसे चूज कर लोगे? तब तो आप या तो एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे. अगर आपसे पूछा गया टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तब आप 80% अपना जो ऐसे टॉपिक लिखो वो एग्री में लिखो, 20% उसमें डिसएग्री डाल दो. तब आप कर सकते हो. बट जब सिंपली लिखा है डू यू एग्री और डिसएग्री, तब आप एक ही साइड से चूज करो. ओके. देन ब्रेनस्टॉर्म द मेन पॉइंट्स, कि क्या पॉइंट्स है, क्या आप इसके बारे में लिख सकते हो. कंस्ट्रक्ट करो अपने पैराग्राफ्स को. इंट्रोडक्शन, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2, एंड देन योर कंक्लूजन. सपोर्टिंग पैराग्राफ, सपोर्टिंग पॉइंट्स बनाओ. कौन से आप पॉइंट्स वहां पे ऐड करने वाले हो, एग्जाम्पल्स को ऐड करो. राइट. ये सब हम डिटेल में करेंगे जब हम टॉपिक वाइज ऐसे करेंगे. चेक योर टास्क रिस्पॉन्स. अब टास्क रिस्पॉन्स मेन इंपॉर्टेंट थिंग. अगर यहाँ पे स्कोर नहीं आया, you will be lying on 6 और 5.5. चेक करो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपने सबको आंसर करा. आपको साइड चूज करने को बोला गया था, आपने साइड चूज करी. राइट. पैराग्राफ्स पे फोकस करा. क्या टॉपिक है आपके पैराग्राफ्स का, आपने सारे सपोर्टिंग पॉइंट्स, आइडियाज कवर करे. राइट. नाउ मेक श्योर आपकी यहाँ नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाता.
आप relevant आंसर दे रहे हो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, वो चेक किया जा रहा है, राइट? सो डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम कि आपको कंटेंट परफेक्ट बनाना है। आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो आप थॉट्स वहां पे पुट डाउन कर रहे हो, वो करेक्ट है या नहीं, वो देखा जाता है। रेलेवेंसी देखी जाती है, रेलेवेंट आंसर है या नहीं। नाउ यू नो दैट ऐसे टाइप्स बेस्ड होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, डिस्कशन पे, एडवांटेजेस पे, सॉल्यूशंस पे एंड ओपिनियन में। सो द वेरी फर्स्ट इज ओपिनियन ऐसे। ओपिनियन ऐसे क्या होता है? ओपिनियन ऐसे इज एन ऐसे जहां पे आपको एक्सप्लेन करना होता है गिवन टॉपिक को बेस्ड ऑन द ओपिनियन, कि आपका क्या ओपिनियन है रिगार्ड्स टू द टॉपिक। सो आप इसको कैसे प्लान करते हो? आप क्वेश्चन को रीड करते हो और एक साइड को चूज करते हो, राइट? और इधर आप अपना ओपिनियन देते हो, फिगर आउट करते हो कि आपने क्यों ये ओपिनियन दिया, है ना? अब जो वो क्वेश्चन था ईटिंग मीट वाला, तो आपने अपना ओपिनियन दिया ना बेसिकली, कि आप एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो। क्या लगता है आपको कि ईटिंग मीट विल कॉज सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स और नॉट? तो आपने अपना ओपिनियन दिया। देन अगर आपने अपना ओपिनियन दिया कि आप एग्री करते हो, तो आप वो रीजंस फिगर आउट करोगे कि क्यों आपने एग्री किया, राइट? मैम, यस जरीन। ma'am, do we have to write 2 paragraphs on agree if we agree on particular topic? In opinion. For every essay, you have to write introduction, then 2 paragraphs and conclusion. अगर आप एग्री करते हो तो आप एग्री के लिए भी 2 पैराग्राफ लिखोगे। फर्स्ट पैराग्राफ में भी आप अपना एग्रीमेंट शो करोगे, सेकंड पैराग्राफ में भी आप अपना एग्रीमेंट शो करोगे। Okay, ma'am. बिकॉज यू नीड टू राइट दोज रीजंस कि आपने क्यों एग्री करा है, क्यों आपका ये ओपिनियन है, राइट? फिर आप सपोर्टिंग रीजंस और एग्जांपल्स उसमें ऐड करते हो। सी दिस क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन है यहाँ पे। Many people say that only way to guarantee a good job is to complete a course in university education. Others claim that it is better to start work after school and gain experience in a world of work. How far do you agree or disagree with the above views? So आपको यहाँ पे agree या disagree करना है, right? कि आप कौन से स्टेटमेंट से एग्री करते हो और कौन से स्टेटमेंट से आप डिसएग्री करते हो। क्या लगता है आपको, राइट? Ma'am, definitely university education is compulsory to get a job. राइट। सो इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन व्हाट आर देयर व्यूज। यहाँ पे व्यूज का कोई जजमेंट नहीं होता। ओके, नाउ दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ओपिनियन ऐसे। देखो फर्स्ट में देखो, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। सो इसमें आप 80-20 वाला परसेंटेज लेके आंसर लिख सकते हो। हाउ फार डू यू एग्री और डिसएग्री विद द अबव व्यू, आप इसमें भी 80-20 लिख सकते हो। जहां पे आपको कंप्लीटली दिया है ना, डू यू एग्री और डिसएग्री, ट्राई कि वहां पे आप कंप्लीट एग्री करो और कंप्लीट डिसएग्री करो। लास्ट वन ऑल्सो, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। नेक्स्ट इज डिस्कशन ऐसे। अब डिस्कशन ऐसे क्या होता है? इन डिस्कशन ऐसे द टॉपिक अलोंग विद 2 अपोजिंग एलिमेंट्स आर गिवन। आपको 2 ऑपोजिट साइड्स दी है, तो दोनों अपोजिंग स्टेटमेंट्स के बारे में आपको डिस्कस करना है और अपने सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स देने हैं। ये पता है थोड़ा सा इजीएस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। 2 स्टेटमेंट्स है, दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में सोचो, आप दोनों पैराग्राफ लिख दोगे इजीली। अपना ओपिनियन तब तक नहीं देना अगर वहां पे पूछा नहीं गया तो। ओके, सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, अंडरस्टैंड इफ यू हैव गॉट टू गिवन एन ओपिनियन और नॉट। अगर नहीं पूछा तो नहीं दोगे। इफ यू डोंट, think about the main ideas revolving around both the statements से related start thinking कि क्या आप लिख सकते हो, right? Ponder on the supporting points and example related to the main idea. Quickly read the question. So question here says some people prefer to directly help or support people who need it in the local community.
However, other prefers to give money to national or international charities. So अब यहाँ पे आपके पास दो अपोजिंग स्टेटमेंट्स है, आपको दोनों को डिस्कस करना है, यहाँ पे आपको एक को चूज नहीं करना. ये डिस्कशन ऐसे है, डिस्कस बोथ व्यूज. आप फर्स्ट स्टेटमेंट को फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करते हो, सेकंड स्टेटमेंट को सेकंड बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस. एंड यू हैव टू गिव योर ओपिनियन ऑल्सो, आपको अपना ओपिनियन भी देना है यहाँ पे. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. See the few examples, few essay topics. Discuss both views and give your opinion. So always you will get two statements. यहाँ पे two मिलेगी. Some people believe that it is essential to learn a foreign language in school. Others believe that it is not necessary. तो जिनको लगता है कि foreign language essential है कि बच्चे स्कूल में learn करें, तो आप उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखोगे. नेक्स्ट पैराग्राफ में जिनको लगता है कि इट इज नॉट नेसेसरी, तो आप उनके लिए सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखोगे. राइट? एंड जनरली डिस्कस बोथ व्यूज जो होता है वो अलोंग विद ओपिनियन आता है. 90% इट कम्स विद ओपिनियन. एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे. नाउ दिस इज अ टॉपिक जहां पे आपको राइट फॉर भी लिखना है और अगेंस्ट भी लिखना है पर्टिकुलर टॉपिक के. राइट? आपको पॉजिटिव साइड भी डिस्कस करनी है और नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करने हैं. राइट? समटाइम्स आपको यहाँ पे ओपिनियन भी लिखना होता है, बट यू हैव टू सी. ठीक है? और यहाँ पे आप अनदर पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो अपना ओपिनियन एक्सप्लेन करने के लिए. So how you gonna plan this essay? Read the question properly and understand if you have got to give an opinion or not. Make a list of advantages and disadvantages that you want to write about in your essay. First paragraph, advantages. First body paragraph, advantages. Second body paragraph, disadvantages. Right? If you are supposed to give your opinion, so make sure आपके पास reasons होने चाहिए उसको support करने के लिए. Now see the question here. Some people think that youngsters should be required to do unpaid work helping people in the community. Are the disadvantages of this requirement greater than the benefits of the community and individual? So पूछा जा रहा है आपसे ये disadvantages ज्यादा हैं क्या benefits से? So kind of a hidden opinion. कि क्या लगता है, क्वेश्चन है, सिंपली नहीं बोला गया आपसे कि एडवांटेजेस लिखो और डिसएडवांटेजेस लिखो. यहाँ पूछा गया है आर डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन द बेनिफिट्स फॉर द कम्युनिटी. तो यहाँ पे आप ओपिनियन भी शेयर करो अपना. सी दिस. डू द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड आउटवे द ड्रॉबैक्स. तो अगेन यहाँ पे आपको बताना है बेनिफिट ज्यादा है कि ड्रॉबैक्स ज्यादा है. तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब आप बेनिफिट ज्यादा लिखो. अगर आपको लगता है बेनिफिट ज्यादा है, ड्रॉबैक्स कम लगते हैं, तो ड्रॉबैक्स कम लिखो. सो मे बी यू कैन राइट 3 बेनिफिट्स एंड 2 ड्रॉबैक्स. ठीक है? आउटवे के क्वेश्चन में. सी थर्ड क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. तो यहाँ पे आप 2 एडवांटेज लिखो, 2 डिसएडवांटेज लिखो. दैट इज fine. Now solution essay. So in this यहाँ पे आपको normally problems और issues को discuss करना होता है जो भी topic से related है. Sometimes question also be why this particular issue happened. So you may be asked to give your opinion based on that. So आप इसको कैसे लिखोगे? Make a list of problems related to the topic given. 2-3 problems can be taken up. और then आप solutions भी लिखोगे उन्हीं problems का. Make sure आप same लिखो इस चीज को. Paragraphs को ऐसे construct करो कि problems are in one paragraph and solutions are in other paragraph. ठीक है? See the example. People today Ma'am, how many problems should we have to write in VP1? at least 2 to 3. Make sure you write 2, not less than 2. And same solutions? Yes, exactly.
2 solutions Okay, per ma'am. problem. Now, people Okay. today do not feel safe either at home or when they are out. What are the causes? What are the solutions? So, क्या cause है इसका कि लोग सेफ फील नहीं करते घर पे या बाहर? ठीक है, तो आपको causes लिखने हैं और solutions लिखने हैं. See this. Ma'am, Yes. ma'am, one solution and two reason लिख सकते हैं? One solution and 2 reason. Yes, ma'am. Why reason? आपको 2 ही लिखने हैं. Okay, ma'am. So see here. यहाँ पे Ma'am, आपको if write two reason, then 4 paragraph is right. No. आप एक ही बॉडी पैराग्राफ में 2 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे. नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप 2 सॉल्यूशंस को डिस्कस करोगे. Okay, then we give us example. Yes. Okay. डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे क्या होता है? दे आर स्लाइटली डिफिकल्ट अगर हम बाकी टाइप्स ऑफ ऐसे से करें, बिकॉज यू वोंट बी गिवन अ डायरेक्ट टास्क, बट कुछ जनरल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे आपको आंसर देना होता है. So you can give different paragraphs for general questions. अगर आपके 3 questions है तो आप 3 separate paragraph बनाओगे. 2 questions है तो 2 separate paragraph बनाओगे. Right? Read the question given. Focus on each question separately. यहाँ पे आपकी addressing बहुत अच्छे से evaluate होती है. Figure out करो each question को separately. Answers should have a main point. Supporting points also. And recheck कि आपने सारे questions को answer करा कि नहीं करा. See the example here. The world's natural resources are consumed at an ever increased rate. What are the dangers of this situation? ये आपका first question है जिसका आपको आंसर देना है. What should we do? और क्या हम कर सकते हैं, ये आपका second है. So first body paragraph में आप dangers of the situation को explain करोगे. सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हो ये आप एक्सप्लेन करोगे. राइट? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज जो कंज्यूम हो रहे हैं वो बहुत इंक्रीजिंग रेट पे कंज्यूम हो रहे हैं. सो मेक श्योर कि हाउ यू विल राइट योर एसे. एड्रेसिंग करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने एड्रेस नहीं करा, टास्क रिस्पॉन्स नहीं फुलफिल करा, you will never get band 7. So now you got an idea that how you are supposed to write this. Different sample ऐसे questions होते हैं different topics पे. Happiness, news, internet, success, lifestyle, family, industry, and there are several topics in the application also. So you can see those topics. ठीक है, ये most common topics हैं. Tourism also, transportation, communication, technology, crime, government related, sports related, population related. So please practice for all these. Now tell me any doubts, anything you want to ask. Because we have Yes, covered ma'am, the I have a introduction. doubt. Yes, Surbi, please tell me. Ma'am, I saw the video of Raman sir. He said that in body part 1, first main point, then explain, then example and result. So main point is I write only one thing, not 2 things. See, this when you're talking about problems, discuss the problems. है ना? Can you write one problem? You have 250 words to write. So how are you going to segregate those words? Your introduction can be maximum of 40 words. है ना? इंट्रोडक्शन में आप पैराफ्रेजिंग करोगे, एक जनरल स्टेटमेंट डालोगे. जब हम स्ट्रक्चर करेंगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि आपको कैसे लिखना है. Okay, ma'am. ठीक है? Next session we will done structure. Yes, we will going to talk about. अभी आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करा है ऐसे राइटिंग का कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऐसे. दिस इज करेक्ट कि आपको टॉपिक स्टेटमेंट लिखना है, देन सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है. राइट? बट अगर आपकी 2 प्रॉब्लम्स है तो आप दोनों प्रॉब्लम्स के लिए सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखोगे ना. टॉपिक स्टेटमेंट लिखा कि प्रॉब्लम ये है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे, देन एग्जाम्पल दोगे. राइट?
Clear, Surbhi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Who were the new candidates today? Harshdeep. Gurvijay also, you are attending the session for the first time? Gurvijay Singh. Can you hear me? I guess Harshdeep is new today, right, Harshdeep? Ma'am, will you give reading session again? I want to take it. Which part of writing you want me to cover again? Ma'am, reading all. My reading is extremely poor. I And want to you make did it not better. attend any of the session for reading module. You started with speaking. Yes, ma'am, I didn't attend. Then please rewatch, because first I will cover all the modules. Can't leave the listening module in between, na? Okay, fine. Hmm. But after listening, will you start Yes, again? I will start again. Do Then watch all the sessions. If you face any difficulty, you can ask me in the sessions. okay, ma'am. Okay. And for Harshdeep, you can rewatch this session in the application, dear. आप इस सेशन को भी दोबारा से देख सकते हो, और जो सेशंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लाइक रीडिंग मॉड्यूल एंड स्पीकिंग मॉड्यूल, बोथ द मॉड्यूल्स आर कवर्ड, सो आप उनको भी दोबारा से देख सकते हो, राइट? एंड वन मोर थिंग, आप राइटिंग की प्रैक्टिस करो यहाँ पे प्लीज, रिपोर्ट राइटिंग की भी, लेटर राइटिंग की भी. Do submit Ma'am, your answers. Yes. Ma'am, I have a suggestion. Yes, Zareen. You can give us homework on daily basis so that I'm not able so to that we evaluate can during the class. what? But I'm not able What did to you say? evaluate during the class. Oh, okay, okay. It's not possible for That's me to really check all the answers in the class, right? I can give you, yes. yes, you have to do one question. You can pick up this question, any question you can take, right? Okay. Or even start practicing from the application. See, यहाँ पे इतने सारे topics हैं. Once you go through them, यहाँ पे आप first topic को choose करो writing का. आपका first topic क्या है? Pie chart का first topic है, उसको करो. Writing task 2 check करो. What is this writing task 2 का first topic? है ना? तो do practice. Yes, Education में जाओ, teacher का first question pick करो, discuss both views, write in your own words. जैसे आप लिख सकते हो, पहले सिंपल वर्ड्स में लिखो. ट्राई टू चेंज इट विद कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी. okay. Okay. Excuse me, ma'am. Yes, Harshdeep. Ma'am, I plan to give exam on 9th May. 9th of May. Yes, You have ma'am. very less time. Why you are in so hurry? Ma'am, because I take IELTS classes 2 to 3 months. Okay, from where? Ma'am, from Ambala City. And do you think you are prepared? Yes, ma'am. Did you give the test of IELTS speaking in our application? Yes, ma'am. I did speaking test all. So how much you scored? Ma'am, 6.5. For speaking, you are scoring this? Yes, ma'am. And did you perform your writing task? Yes, ma'am. I also write. So how was your score in writing? Ma'am, 5.5 in task 1. They And give what- me. And what is your desired band score? 6 and above. Ma'am, 6 above. Exactly. Anna, because you can't settle for 5.5. 6 and Yes, above is required for academic one. Whether you go any country, you need 6 and above. Yes, ma'am. So please practice, because you have very less time. Only 7 days, a week left for your exam. Yes, ma'am. Okay. So make sure you rewatch all the videos. And how much score is there in the reading part? Are you checking your reading answers? Reading and listening?
Ma'am, 6.5 या 7. Okay, for both the modules? But ma'am, For reading and listening, I'm asking. ma'am listening में 7 से above. Okay, okay, great. Okay, then do practice for writing module, please. Because writing, you're getting only 5.5. Okay, ma'am. Do watch all the 4 sessions which we have covered for writing. Okay, ma'am. Okay. Anyone else? Any doubts? Ma'am, reading and writing both are very difficult modules. But reading is not that difficult, Zareen. You Ma'am, just reading need is a time. extremely difficult. You're Extremely for difficult. academic. You're for academic, right? Yes, ma'am. So you need 6.5 And I have to take reading 7 or above. 7 plus. Okay. Yes, ma'am. Do watch all the sessions. Okay. If still you Okay, face ma'am. doubts, The greatest problem which I am Mhm. facing in true false not given, and I don't know why my all true false not given are all are incorrect. Always. Always. Not even a single one is right. So what you do today for true false not given na, once you go to this IELTS classes, application में जब आप classes को open करोगे, IELTS जी. classes in Hindi and IELTS classes in English. Okay. ये जो 2 columns हैं, classes in Hindi, IELTS classes. Okay. Okay. सिर्फ IELTS लाइव क्लासेस नहीं, वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं अब वाली, जो पहले की क्लासेस हैं हिंदी एंड इंग्लिश वाली, उसमें से आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करना, ठीक है। उसमें रीडिंग का सेशन नंबर 5, स्ट्रैटेजीज फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर। I'll see if I can conduct again, but that's very difficult because we have a schedule, right? If you will conduct session for me, I'll be really grateful to I you. have to talk to the team because we are going according to the schedules, right? And tomorrow is Friday now. So Friday, tomorrow, there will be no class. So we're going to meet now on Monday. Okay? Excuse Okay, me, ma'am. Yes, please. ma'am. Give me strategies for speak fluently in speaking. If you want to look for the speaking tips, please speaking के tips में जाओ. English and Hindi में both the tips are available. You can watch them. Okay? Okay. And all the speaking sessions we have already covered. So please watch those sessions. Okay, ma'am. Okay? ठीक है, ma'am. Okay then. See you all on Monday. Bye-bye. Take care. Bye, ma'am. Bye, Okay, ma'am. ma'am. Thank you so much. No worries. Bye. God Take bless care. you, ma'am. Thank you. Bye.